Welcome back. This episode will have some stories and some art for you. Let's go to see and watch a story. And I was getting some suggestion from all of you that instead of running the entire video, I should be able to stop it and talk to you regarding your stories or your explanations. So I think I'm doing that, and let's move to our story and see what is there for us today. We have a story of ant and a pigeon. Ant and Pigeon. It's a beautiful morning. You can see a lot of amazing trees outside. Once upon a time, in a forest, there was a big tree on the river bank. On the tree, a pigeon and an ant used to live peacefully. One day, as they were chatting, rainy season is coming. From now, I have to store food. Okay then, let's go. I will have something and come. While the ant was walking, a strong wind blew. The ant fell down into the river due to the wind. Oh my The ant god. was drowning. Oh God, I'm drowning. Please save me, buddy. Save me. Do something fast. Then the pigeon, oh no, my body is drowning. It looked here and there and plucked a big leaf and threw it near to the ant. The ant reached the bank using the leaf. Then the ant thanked the pigeon for saving him. As the time was going, one day a hunter came to the forest. I'm hunting from morning, but I got nothing. Students, I think while watching this story, you need to understand that friendship is a very important bond, and we need to be ready to help our friends and relatives in time of need. Now when you saw जब एंट पानी में गिर गया तो पिजन ने उसकी मदद की. पिजन उसका फ्रेंड था. पिजन ने उसको पत्ता फेंक के उसकी जान बचाई. Now it is time to pay back, and when you help people, people will help you. So let's move on to story and see what it is there. As moving forward, he saw a sleeping pigeon. Somehow, today I have to kill it and have it for food. Thinking that, he aimed for pigeon. The ant which was passing by saw the hunter. Oh no, my friend is in danger. I have to save my buddy at all costs. So it went near to hunter and bit the hunter in the leg. The hunter's arrow missed the pigeon. Due to the sound, pigeon woke up and flew away from the tree. Pigeon thanked the ant. Thereafter, the ant and the pigeon happily lived on the tree. When someone is in danger,
If we help them, we will also get help. Good things go in circles. So, life is all about doing good to others. So, when you do good, good will come back to you. It is nothing in vain in our life. If you are helping others, people will help you. So, dear students, all my chota bachas, I request you that start thinking of helping people in your life. You can help your mom right now. You can help her by eating your food properly and on time. जब मम्मा आपको खाना देती हैं, जब मम्मा आपको ब्रेकफास्ट खिलाती हैं, आप उनका काम जैसे उन्होंने बोला वैसे ही करोगे, शी विल बी हैप्पी. And you can take bath on time. In this lockdown, it is not necessary that you all get up late, you all take bath late. No, you can follow your routine every day. Get up early, take bath, complete your rules, brush your teeth, and you can do your things. And by doing this, you are helping your mom. Your mom is not bothered. Then you can go an extra mile. आप कुछ और भी मम्मा के लिए कर सकते हो. You just can go and talk to your mom. That mom, how can I help you? She might be stressed. She might be tired. So आप मम्मी से पूछ सकते हो मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. Then you have grandparents at home. You can go and talk to your grandparents. You can go and do little things for them. You have your father also at home. So the whole idea of human being is helping others. So when you start helping different people in your life in different way, this good will come back to you all. So I request each of one of you to be helping to your friends and relatives. Thank you. Good morning, everyone. Welcome to a new class of Masti Ki Pathshala. So here you see we have a lot of people in our class today. So we have Tutu all the way from Australia. We have Minnie Mouse Akshara from Rajapark. Hello. Hi, and then we have Shweta ma'am from high school. How are Hello. you, ma'am? Fine, ma'am. How are you? So I'm good. आज आज चूहों का दिन है शायद, तो बहुत सारे चूहे दिख रहे हैं मस्ती की पाठशाला में. तो मैंने सोचा मैं भी Yay! अपने आप को चूहे की तरह डिस्गाइज कर लूं, तो मेरा एक छोटा सा चूहा वाला रूप आपको दिख रहा है. तो श्वेता मैम, आपको कैसी लगती है हमारी मस्ती की पाठशाला? बहुत मैम, मैं इसको बहुत एंजॉय करती हूँ. छोटी छोटी सी स्टोरीज हमारी लाइफ में इतना वैल्यू करती हैं, जो आप हमको मस्ती की पाठशाला में दिखाती हैं. दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल. आपका जो काइंडनेस वाला मैम वीडियो था ना मस्ती की पाठशाला का, वो मैं बार बार जाके यूट्यूब पर देखती हूँ. इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल माई इन लॉज एज वेल माई हस्बैंड एज वेल एज माई किड्स. इतना छोटा सा 10 मिनट्स का वीडियो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैम. और देखते हैं मैम ओके. आज क्या अपन नया मस्ती की पाठशाला में आप क्या लेकर आए हैं. इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए. ओके, तो आज आपका एक्साइटमेंट रहेगा हमारे साथ. और आज जैसे आप देख रहे हो, पिछले एक हफ्ते से हम लोग खूब सारे एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं. अलग अलग जू में हमने एनिमल्स देखे, एक्वेरियम में जाके एनिमल देखे. तो आज हम आपको एनिमल से आगे लेके चलते हैं और एनिमल्स की भाषा को समझते हैं. तो जैसे हमारे पास एक बोलता हुआ टुट्टू है. टुट्टू, आपको पता है डिफरेंट ओके एनिमल मैम. कैसे आवाज निकालते हैं? Yes. ओ वाओ. तो टुट्टू, आपकी आवाज बहुत अच्छी है. मेरी आवाज मैं तो इंग्लिश ही बोलता हूँ और हिंदी. ओह क्यूट. ओके टुट्टू, तो हम आगे बढ़ते हैं. तो मैं आपको एक ओल्ड मैकडोनल्ड्स के जू में लेके चलती हूँ, जिसके जू में डिफरेंट एनिमल्स हैं और वो एनिमल्स कैसी आवाज निकालते हैं हम वो देखते हैं. सो रेडी टू गो? उस मैकडॉनल्ड्स में यस मैम, वी आर रेडी. Excited!
ओके यस टुटू, आप क्या बोल रहे हो? उधर मैकडॉनल्ड का जू है, उधर फ्रेंच फ्राइज होते हैं क्या? फ्रेंच फ्राइज खाना है टुटू को? अभी टुटू लॉकडाउन है। सो ये मैकडोनल्ड्स वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये ओल्ड मैकडोनल्ड्स है जिसके पास एक जू है। सो आई वुड लाइक ऑल माय पेरेंट्स टू शो दिस वीडियो टू पेरेंट टू किड्स, एंड एक बार देखने के बाद इसकी ट्यून में बच्चों को ये गाना गाना सिखाइएगा। और टुट्टू आप भी अब सीखिएगा उनसे गाना गाना और गाइएगा लास्ट में, ठीक है टुट्टू? ओके। Okay, so teachers, I request you also to participate and sing. And उसके बाद श्वेता मैम का एक वीडियो है जो वो हमको दिखाना चाहती है, तो हम दोनों वीडियो आज कवर करेंगे इस वीडियो पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो आपकी स्क्रीन में एक फोटो है जिसमें एक पांडा है। सो आई एम स्टार्टिंग टू सिंग दैट। मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं, बट मैं कोशिश करूंगी। Old MacDonald had a zoo, E-I-E-I-O, and Old in that MacDonald's had a zoo. zoo, E-I-E-I-O. And in this zoo he had a panda, E-I-E-I-O. So ये हमारी ट्यून है, हम फिर से गाएंगे और एक चीज को 2 बार गाएंगे। So all of you also can sing with me. एंड मैं आपको एक बार राइट हैंड साइड वाला भी ट्यून बता देती हूँ, सो आपको आइडिया लगेगा कैसे होता है। With a bark here and a bark there, here bark, there bark, everywhere bark. Old MacDonald had a zoo, E-I-E-I-O. So this is a complete rhythm of Old MacDonald's. So Akshara, Okay. done. So ऐसे Yes. हमारे पास 4 पेजेस हैं। So this is the first, ये ब्लू वाले हमारे ओल्ड मैकडोनल्ड्स अंकल हैं और ये हमारा पांडा है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। Old MacDonald's had a E-I-E-I-O. Old Old MacDonald MacDonald's had a had zoo, a farm, E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. And And in in that zoo we had a this panda, zoo we had a panda, E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. With a bark here and a bark there. Bark, bark, there, here bark, there bark, everywhere bark, bark, bark. Old Old MacDonald had a zoo. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a McDonald had zoo, a zoo. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. and in this zoo he had In some this zoo hyenas, he had some hyena, E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. And in this zoo he had some hyena, E-I-E-I-O. Okay, so अब ये वाला पेज श्वेता मैम गाते हैं। With a he here and a With the he there. he, there, here, he, here, there, he, everywhere, he. Old MacDonald had a zoo, Zoo. E-I-E-I-O. And in And this zoo in he this had a zoo, giraffe. he had giraffe, E-I-E-I-O. With a he here, he there, here, he, Here everywhere. he, there he, everywhere he Had had zoo. a phone, E-I-E-I-O. ओके, तो अब जिराफ आने वाला है, तो जिराफ को कौन गाएगा? अक्षरा आप गाओगे कि टुट्टू आप गाओगे? I will sing. ओके, यस, ओवर टू यू। Old MacDonald had a zoo. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a zoo. E-I-E-I-O. In his farm he has a giraffe. E-I-E-I-O. With a mew mew here, with a mew mew there, and a mew here, a mew there, a mew everywhere, mew mew. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a zoo. E-I-E-I-O. या मैं वही सोचूं, अक्षरा जू से फार्म में क्यों चले गई? Okay, so we have Tutu. Okay, Tutu is loading. So old MacDonald's had a zoo, E-I-E-I-O. And in the zoo he had some penguins, E-I-E-I-O. तो मैं ये सोच रही हूँ अपना ये जू है कहाँ पे? इसके पास पेंगुइन भी है, पांडा भी है, जिराफ भी है। लगता है सैन डिएगो जू पहुंच गया ये भी।
Okay, Yes. yes, Shweta, you can take it. With a honk honk here and a honk honk there, here honk, there honk, everywhere honk honk. Everywhere honking. Old Okay, MacDonald had a zoo. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a zoo. E-I-E-I-O. with a honk here, honk there, honk here, honk there, honk there, honk, everywhere honk honk. Old MacDonald had a zoo. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. ओके, फिश खिला रहे हैं ये देखो पेंगुइन्स को. Yes. अब ये तो लायन आ गया. चूहे को लायन से प्रॉब्लम है, तो हमारा चूहा कुछ करेगा आज. किसको याद है वो शेर और चूहे की कहानी? I remember it. ओके, तो सुनेंगे I आप also. बात. शेर और चूहे की कहानी बहुत पुरानी हो गई है, बच्चे शायद भूल गए हैं आजकल. ओके, Yes. टुटू इज देयर. टुटू इज नॉट देयर. ओके, टुटू के साथ कुछ प्रॉब्लम है. टुटू शेर को देख के भाग गया लगता है. Okay, and in this zoo we had a lion. E-I-E-I-O. With a Okay, roar here and a roar there. Here roar, there roar, everywhere roar. Tutu is back. okay. Hello, Tutu. So you can see we have a lion. Oh no. Tutu, don't be scared. Okay, so with a roar here and a roar there roar, everywhere roar. Everywhere roar. Old Okay, MacDonald had a zoo. E-I-E-I-O. And in the zoo he had a bed. E-I-E-I-O. Oh wow, he can sleep there also in the zoo. Wow. see, the way this old MacDonald is sleeping with his panda, giraffe, hyena, lion, Lion. and penguin. Similarly, Tutu also sleeps like this in my house. So I think I need to change the rhyme. Old young Tutu had a zoo, E-I-E-I-O, and he has all the animals in my house, and I think my house is also like all this zoo now. Okay, with a good night here and a good night there. Here good, there good, here good, there night, everywhere good night. Old MacDonald had a zoo. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. ओके, तो चलिए श्वेता और अक्षरा और हमारा प्यारा टुट्टू, अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछती हूँ. जो भी जवाब देगा उसको एक टुट्टू गिफ्ट मिलेगा. ओके. Oh. ओके श्वेता, कौन जवाब देता है? व्हाट एनिमल्स आर देयर इन मैकडॉगल्स जू? Panda, ओके, giraffe, lion, ओके, mouse. ओके. अरे माउस कहाँ था? माउस तो हमारे पास है. टुट्टू तो मैं यहाँ. मैं माउस था ना, लायन के साथ छोटा सा माउस भी था. ओके, तो टुट्टू यू गिव मी आंसर. आवर ओल्ड, अच्छा हमने तो मैकडॉनल्ड गा लिया, ये तो मैकडगल्स है. चलो मैकडॉनल्ड्स ही देते हैं. आर ओल्ड मैकडॉनल्ड एनिमल्स रियल एनिमल्स और स्टफ टॉयज टुट्टू? रियल एनिमल्स है कि स्टफ टॉयज हैं? जो भी आपने अभी एनिमल्स देखे, कौन करेगा गैस? अक्षरा आप बताओ. I cannot. Ma'am, I think they were stuffed toys. हाँ, तभी तो उसको लेके सो गया वो रात में. Yes. Yes. इसलिए लेके सो गए. Real animals. And if you they were also real have given animals, that clue. Yes. Okay, so we have words. Mimi किसने बोला था? Mimi से panda, giraffe, penguin, bark bark. Okay, honk honk किसने बोला? Hong Kong, penguin. Yes. Roar.
Lion. Lion. Ha ha. Old I don't know. MacDonald. No, ha Old ha. MacDonald. Hyena, hyena. 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 Okay, okay. Hyena. Yeah. Yeah, and bark. Bear. Bark was finally with a bear. Okay, Bear. so it was nice talking to you all. टुट्टू, आपको सबसे अच्छा कौन सा एनिमल लगा इसमें? पांडा। पांडा आपका फेवरेट क्यों है? क्योंकि मेरा दोस्त है वो भी पांडा है। ओके, आपने कभी पांडा देखा भी है? Okay, so now I am taking you to another video, which another book which talks about animals really having their sounds. So, Akshara, I want you to read it, and Okay. I will put a question with every page, and Shweta ma'am will answer. And Tutu will say whether Shweta Okay. ma'am gave the right answer or wrong answer. Okay, all ready? Okay. Yes. Okay. Okay, so over to you, Akshara, the first page. Is it visible? Okay. We can see a picture of a cat. Oh, that's not a cat. It's the baby cat. And what is a baby cat called? The baby cat is called kitten. So meow says the kitten. And we have another picture. Croak says the frog. Okay, so let me ask the question first. So, Shweta ma'am, what is the baby cat called? Yes, ma'am. Baby cat is kitten. Right, Okay, Tutu? Tutu is not there, I think. Let me see. Tutu is there. Tutu is not there. Not Okay, there. so yes, Okay. your answer is right. So, what is the color of our cat's yarn? She has some yarn in front of her. ये yarn से खेल रही है, right? Yeah, yes. She's playing with yarn, and I can see it is orange in color, and one is white. Okay, Right? so right, very true, Shweta ma'am. Now we Oh, have thank you. frog. What is the color of the frog, ma'am? Real one on this picture only, ma'am. Real. Real frog is in green in color. Shweta ma'am, we have a blue frog which is poisonous. और Oh, that I वो don't अगर know. काट ले तो हम मर भी सकते हैं. Okay, Oh my so here we God, have blue two frog. another This is animals. the okay. This Yes, is the new information for us, ma'am. Blue yes, frog. That blue is frog, poisonous. very dangerous. I will show you all Dangerous. tomorrow a video on blue frog, Okay. and but they look very pretty. Sure. Okay. Sure. Okay, Okay, ma'am. yes, Akshara, here you go. Hoot says the owl. And we have another picture saying stick says the mouse. Mouse. मुझे तो ये टुट्टू का रिश्तेदार लग रहा है. Yes. he has cheese in his hand. हमारे टुट्टू का भी चीज है. Yes. Okay, yes, Akshara has given us two animals, owl and mouse. Okay, over to you, Yes. Shweta ma'am. What is so special Yes. about mouse? Sorry, what is so special Mouse. about owl? Owl, sorry. Owl की speciality. Owl. आउल रात में जागता है और हम लोग रात में सब सोते हैं. राइट मैम? वेरी ट्रू. एक उल्लू ही ऐसा यस. जानवर है जो रात में जागता है और दिन में सोता है. सोता है. ये ओके. कौन सा चूहा है? टुट्टू. ये टुट्टू के पापा है आज फोटो पे. ओके. Ma'am,
Yes, मैम Akshara. आप हमें माउस और रैट में डिफरेंशिएशन बता सकते हैं क्या? माउस और रैट में डिफरेंशिएशन. यस. ओके, मेरा भी इतना जनरल नॉलेज स्ट्रांग नहीं है. कल इस पे वीडियो बनाते हैं हम लोग. ओके मैम. मुझे किसी ने पूछा था एलिगेटर और क्रोकोडाइल में डिफरेंस. तो जो हमारे मछली की पाठशाला है ना, उसमें से मैसेज आया था कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल का डिफरेंस बताइए. तो हम लोग कल क्लास करेंगे और उसमें एलिगेटर और क्रोकोडाइल प्लस माउस माउस और और रैट. रैट, ये टुट्टू को ही बोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपनी दोनों जाति के लोगों को. ओके ओके. Ma'am, So there let's is move one. Now what is forward. next? हाँ अक्षरा बोलिए. Ma'am, there is one more speciality about owl. You know, if we speak something and if there is a real owl, the owl repeats the same words. Oh. Okay. Yes, it happened And there me. is one more specialty. Okay. एक और चीज बोलते हैं आउल के लिए कि आउल अगर आउल बहुत वाइज माना जाता है. Yes. एज वाइज एज आउल बोलते हैं ना. सो आई डोंट नो रियलिटी में कितना वाइज है, बट इट इज ऑलवेज said as wise as owl. Tutu is in the stream. I'm trying to connect him. Yes, Tutu is there. Okay, let's move to our next photo. Hey. Buzz. Yes, Akshara. Oh, we missed the page. Buzz says the Yes, this bee. bus says. And the buzz sound. The bus sound is for the bees, right? Yes, yes. The bee makes the sound buzz. Buzz. And chirp says the Buzz. cricket. Shweta ma'am, what is cricket? Okay, so here is the question. Insect. It's an insect, ma'am. Bee and cricket both are insects. Okay. And how many legs an insect has? 8 legs. Every insect has a 8 legs. We have 2 Wow, legs. so many Animals legs. has 4 legs. And insects has 8 legs. Wow, Okay, so so let many me legs. clear. Shweta ma'am, jawab. Insect has 6 legs. Oh, So all the 6. insect has 6 legs, and only spider has 8 legs, and that is why spider is not an insect. तो जितने भी इंसेक्ट है ना, Okay. 6 legs होते हैं. ओके, Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. और हमारे पास अब सॉन्ग बर्ड है और डॉल्फिन भी है. oh, tweet says the songbird. Tweet, 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 tweet. And we have good says the dolphin. Oh wow, ma'am. Dolphin sound is Click. See, I told you ना, there are so much of information you are learning from this मस्ती की पाठशाला. आपको पता था yes. डॉल्फिन करती है? No. No. So No, now you ma'am. all know dolphin clicks. So that was all about our story to our sounds today. So आज हम लोगों ने animal sounds किए हैं और हम लोगों ने Old McDonald's किया है. So thank you all for coming to this studio and participating. Hope आपको मजा आया होगा आज. Yay. Yes. Okay, thank you. So we'll meet again. Go grab some water and get back for another Masti Ki Pathshala. Okay. Okay.